वन और पर्यावरण मंत्रियों की और सभी राज्यों के आला अधिकारियों की परिषद संपन्न हुई। उसमें जो निर्णय लिए गए वो एक रिजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर्स आपको दे रहे हैं। लगभग 30 मंत्री इसमें शामिल हुए। कुछ राज्य विधानसभाओं का अधिवेशन चल रहा था, इसलिए बाकी नहीं आ पाए, लेकिन लगभग 400 अधिकारी उपस्थित थे। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, जीव वैविधता और पोल्यूशन कंट्रोल के विशेषता, प्रदूषण के लिए जो पोल्यूशन बोर्ड है स्टेट के, उसके अध्यक्ष और मेंबर सेक्रेटरीज वो भी आए। और जैसा हमने कल आपको बताया था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया जिसके आप साक्षी हैं। उसके बाद वेस्ट टू वेल्थ, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई। सभी मंत्री भी बोले, अधिकारी भी बोले। दोपहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट, उसकी चर्चा हुई। आज 3 विभागों में चर्चा हुई 4 घंटे, और एक चर्चा अभी भी चल रही है। वन्य प्राणी और ग्रीन इंडिया मिशन, ये 3 का एक ग्रुप था, और जिसकी चर्चा अभी भोजन के बाद भी अभी चल रही है, समापन के बाद भी उनकी चल रही है। दूसरा ग्रुप था जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में और बायोडाइवर्सिटी, जीव वैविधता के संबंध में, उसमें भी एक बड़ी सार्थक चर्चा आज रही। और तीसरा ग्रुप पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज जो थे, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन स्पेसिफिक और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब की चर्चा हुई। आज मुख्यतः पोल्यूशन की चर्चा ज़्यादा हुई। इससे जो नतीजा निकला है, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा 5 साल के बाद ऐसी परिषद भरी है। 5 नहीं, 6 साल के बाद। 2009 में एक बार हुई थी, उसके बाद आज पहली दफ़ा हुई है। हम इसको एनुअल फीचर बनाना चाहते हैं। इसके पहले हमने 3 चिंतन शिविर किए। दक्षिण और पश्चिम राज्यों का बेंगलुरु में हुआ, उत्तर भारत के राज्यों का भोपाल में हुआ, पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों का गुवाहाटी में हुआ। और इन तीनों इसमें पहली दफा अधिकारियों को एक महसूस हुआ कि मंत्री बैठे हैं और वो बता सकते हैं अपनी कल्पनाएं, विचार, और हम नोट कर रहे हैं। तो उसमें लगभग 180 अधिकारियों ने बोला, और यहाँ आज, कल और आज मिलके लगभग 120 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब मिला के। इसमें 4-5 बड़े फैसले हुए हैं। एक तो रिकैटेगराइजेशन करने का, वी हैव डिसाइडेड टू रिकैटेगराइज द ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड कैटेगरी। नाउ these categories will be based on pollution potential, because we want to discourage or have stringent action for more polluting industries. So we'll categorize them. So those who will score above 60 on pollution index, which we have prepared, so they will be categorized as red. Those between 30 and 59 will be categorized as orange. And those between 15 and 29 will be given green certification. Green, they will be categorized as green industries. And below 15, in a way white, because they are not at all polluting industries. अभी हर साल इंडस्ट्री को पर्यावरण मंत्रालय में, वन मंत्रालय में आना पड़ता है। अब हम इसका 1 टाइम पेमेंट फीस लेके रेड कैटेगरीज को 5 साल का, ऑरेंज के लिए 10 साल का,
और ग्रीन कैटेगरी को 1 टाइम यानी लाइफ टाइम उसका हम सर्टिफिकेशन देंगे। दूसरा बड़ा निर्णय हुआ है कि अपने देश में लगभग 30% सीवेज ही ट्रीट होता है। ये 70 साल के बाद की लेकिन वास्तविकता है। और जब तक ये नहीं ट्रीट होगा तब तक वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन और हेल्थ हजार्ड्स समाप्त नहीं होंगे। और इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट को स्टैंडर्ड बना के सब जगह कैसे जल्दी हो, और इवन छोटे कस्बे लेकिन जो ग्रोथ सेंटर्स है वहाँ भी कैसे ठीक तरीके से हो, इसके भी अनेक सुझाव आए, चर्चाएं, आज रिजोल्यूशन भी हुआ, मिनिस्टर्स ने कहा। तीसरा एक बड़ा फैसला हुआ है कि 17 क्रिटिकली पोल्यूटिंग सेक्टर्स ऑफ विच देर आर 3,206 industries, 3,206 industries from 17 polluting sectors are mandated 24/7. We have reviewed all these things and timetable has been tweaked because many people have given orders but their fitting and everything is going on. So up to 30 June they have to give, and even till that they have to give bank guarantee. So 30 June is the last day for more polluting industries like cement, thermal power and others to have that 24/7 air and effluent discharge monitoring, which will be 24/7 and which will be linked to the State Pollution Control Board as well as the Central Pollution Control Board. दिल्ली के लिए एक नहीं, दिल्ली का मैं अंत में बताता हूँ। एक दूसरा बड़ा है CETP का, कि जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान लगता है, लेकिन अब वहाँ पानी का वेस्टेज न हो, पानी की बचत हो, इसके लिए वो ZLD का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के तहत काम करके वही पानी रिसाइकल होगा, फिर इंडस्ट्री को मिलेगा। इंडस्ट्री को फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर वाला नहीं मिलेगा। तो ये भी सभी राज्यों ने स्वीकार किया कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट के आपको भी बता रहे कि कल पिछले सप्ताह ही हमने 4 वेस्ट के रूल्स नए सिरे से जो बनाए हैं, अमेंड किए हैं। ई वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट, इसके नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और वो अभी वेबसाइट पर रखा है। 60 दिन रहेगा, अभी 50 दिन बाकी है। सभी लोग वो देख सकते हैं, देखे, और अपने कोई सुझाव है तो वो दे दे, ताकि उन सुझावों को ध्यान में रखकर हम उसको अंतिम रूप देंगे। हजार्डस वेस्ट के रूल्स को हमने अंतिम रूप दे दिया है, अंतिम मान्यता दे दी है, अब वो ऑफिशियल बन गए हैं। हमने सभी राज्यों को ये भी कहा कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस की प्रक्रिया शुरू की, एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए, सभी कामों के लिए हमने तो ये शुरू किया। लेकिन स्टेट में जो सिया होता है, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और स्टेट एनवायरमेंट असेसमेंट कमिटी, तो उनका प्रोसेस, सिया और सिया, इनका प्रोसेस अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो सभी राज्यों को हमने कहा और सबने मान्य किया है कि वो भी जल्दी इस दिशा में ऑनलाइन करेंगे, ताकि एक पारदर्शिता और आएगी। अंत में दिल्ली के बारे में ये फैसला हुआ, कल हम इस परिषद के बाद शाम को उत्तर प्रदेश के मंत्री अभिषेक मिश्रा, दिल्ली के मंत्री श्री खान और हरियाणा के मंत्री अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, और राजस्थान के मंत्री, ये चारों मंत्री, हम और मैं, ऐसे हम 5 लोग और सभी अधिकारी थे। क्योंकि दिल्ली का प्रश्न केवल दिल्ली में
दिल्ली म्यूनिसिपल सीमा में करके नहीं होता है, वो एनसीआर और उससे भी ज़्यादा एक नया शब्द है और जो सही है एयर शेड। जैसे वाटर शेड होता है एक बेसिन मैनेजमेंट में, वैसे एयर शेड है कि एक हवा का रुख सब उस सभी क्षेत्रों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसलिए उसकी मीटिंग हुई, विस्तार से चर्चा हुई, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा रही। और 13 तारीख को अगले सोमवार को फिर से मंत्रालय में हमारे यहाँ सभी मंत्री आएंगे, अधिकारी आएंगे, तुरंत क्या कर सकते हैं एक एक एजेंसी। और उसमें उस दिन हम दिल्ली तीनों महानगर निगम और दिल्ली पुलिस को भी बुलाएंगे और फिर जनता भी उसमें क्या कर सकती है वो भी हम बताएंगे। तो ये जो बड़े प्रश्न हैं उसके दिशा में हमने एक पहल की है कि कंस्ट्रक्शन वेस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है, धूल उसी से ज़्यादा आती है। ये जो 2.5 10 पार्टिकुलेट मैटर की जो बात चल रही है वो उसी से पैदा भी होती है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वेस्ट के हम रूल्स 15 दिन में फ्रेम करेंगे, फिर उसी प्रक्रिया में उसको भी वेबसाइट पर रखेंगे, 2 महीने में वो अंतिम रूप देंगे और उसको लागू करेंगे कड़ाई से। तो ये दिल्ली के प्रदूषण को भी हमने बहुत गंभीरता से लिया है और वी आर गोइंग टू, सो ये हुआ है। मैं जस्ट इंग्लिश में थोड़ा दो मिनट का ही बताऊं। Yesterday and today we had a very good and successful conference of environment and forest ministers from all the states, and all the important officers, more than 400 officers attended it, and urban development secretaries and officials also attended it, because waste management is in the urban development. And yesterday we discussed the waste to wealth, then ease of doing business, and TRS Subramaniam committee report. Then also we today break out in 3 different sessions, and one group discussed the forest, Green India, and wildlife. The second group discussed the climate change, biodiversity related issues, and the third group discussed the pollution related issues, into which waste management, the sewage treatment, and air and water pollution issues were considered. 5 things are the main outcomes. All resolution is already adopted, which we are giving, but we have decided to recategorize of industries depending on pollution potential. This is very important step, because based on pollution potential now we will be categorizing. Otherwise, earlier categorization was not reflecting exactly the potential of the pollution, because that is what exactly we want to tackle. And so those who will score more than 60 will be categorized as red. Those who will score 30 and 59 will be categorized as orange, and those who will be in the category of 15 to 20 will be declared green industries, and below 15 they are in a way white, because they are absolutely environmentally friendly. Every year's renewal we want to do away with, and therefore we are suggesting that 5 years for red category, 10 years for orange category, and one time certification, so they will not be again and again going to various government offices. Second is sewage treatment plants. Today we are treating only 30% of the sewage generated in cities and urban conglomerates, but now we need to do more and aggressively, and therefore we are asked states also to take up these projects, and successful models were exhibited. Then 24/7 monitoring is now applied to 17 critically polluting sectors, in which 3,206 industries are there, and they will have to, because many have ordered, but their fitting and testing is on. So by 30th June they have to do it. Now they will have to give bank guarantee, but after 30th June, no extension will be granted. The CETP at industrial clusters
is common effluent treatment plant. They will have to set where ZLD concept will be implemented, in which after treatment, the recycled water will be used by the industry itself. And so it will be a continuous flow of water in a circular manner. The waste management rules have been framed. Hazardous waste rules are being reviewed, renewed, and are published now. They are final. E-waste, solid waste, biomedical waste, and plastic waste rules are put on website for public consultation. So all suggestions are welcome and will then finalize after 2 months. We have also decided that states, as center has taken online approach and online process, so SIA and SIAC, which receive many applications, more than the center receives applications. So they must do it online, so to give the transparency. So that's the basic outcome of this. It was a very successful, and the guidance of Honorable Prime Minister was held by everybody, because he delivered practically on all, he touched all issues, all aspects of environment, climate change debate in the world. Thank you. From my side. सर, आपने कहा कि उद्योगों को पानी भी फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा और रीयूज उनको करना पड़ेगा, बट हर रिसाइकिल पे कुछ वाटर लॉस तो होगा, उसको हाँ, तो उतना मिलेगा ना, यानी आज एकदम कम हो जाएगा। देखो, हमें पानी की भी बचत करनी है और पानी को उपयोग में लाना है। जो पानी उपयोग में आ सकता है उतना ही होगा, बाकी जो प्रोसेस में कम होगा उतना तो मिलेगा ही। हाँ। Yesterday, many of them have welcomed the fact that they will actually know the quality of the air they breathe in. But going forward, are there any steps that the government is considering to either penalize or make deterrent, steps, so that either diesel cars are, asked to be removed from roads, or alternate banning of cars, even That's what I said, that as far as Delhi is concerned, and it is concerning to all, but Delhi, because you are all here and you want action on that, so that's the starting point. अब बीच में हवा का प्रदूषण, see, air gets polluted for many reasons. Last 2 days, Mumbai is getting polluted because from Saudi Arabia the sand is coming. Now whom to blame and how to do it? But that's the nature. What we are saying is, whatever human actions are possible to mitigate this pollution is a must. And it's a daily fight. We can't sit back after taking one major step. And I always think that we have sat back after taking one step. So once it was, industrial pollution was in highlight, then Jagmohan came and Jagmohan removed many industries outside Delhi. We thought that it is over. Then there was pollution. So court ordered CNG to fit onto vehicles. We thought that it is over. Then there was again pollution. So people talked of public transport. So metro started. Now 27 lakh people are using metro. But still pollution persists because every day vehicle numbers and many other factors are growing. Population is growing. So it's a war which we have to fight every day. And all put together. It is not Delhi Corporation, Delhi government, central government, or Uttar Pradesh government or Haryana government. It's all put together. It's an air-shade treatment. And that air-shade treatment is important. Yesterday we discussed, all ministers of NCR regions and all officers, and we have decided that we'll come out with some concrete plan. What we will do in 2 months, what we will do in 6 months, what we will do in 1 year. So let us build up that action plan, and for that there will be an exhaustive meeting on 13th of April in Ministry of Environment. So we are very seriously looking into it. Sir, we will do it the same way. These are the lessons. Now see why this air quality index and why 24 hours you can see health of air quality in 10 cities, which we want to increase it to 66 cities. So people will compare. People will build pressures on local self-governments, plus state government, central government, and plus there will be more awareness. Because citizens can also do many more things. Lane discipline, avoiding congested roads, vehicle maintenance, and not idling at big signals. These 4 steps can reduce big amount. It can make big difference.
So everybody has to act. All state governments, all municipal agencies, even traffic management for that Delhi police or every traffic police. So everybody needs to act and industries also. Is there सर any इसी plan- से is जुड़ा there any सर इसी plan- से जुड़ा हुआ is there सवाल है any प्रकाश plan जी। on the lines of Beijing and प्रकाश जी। what France and Beijing have done? Is there anything on the lines of No, that? no, sorry, I go frequently to Beijing and Shanghai. I don't want to go into that discussion which is the bad city. Hundreds of cities world over are facing air quality problem. प्रकाश जी, प्रकाश जी से जुड़ा सवाल आपने- है, दिल्ली का मुद्दा आपने उठाया है। आपने कहा कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके इतर अगर दिल्ली की बात करें तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आरएसपीएम एसपीएम में कन्वर्ट हो रहा है। दिल्ली में एक बड़ा इशू लंबे समय से रहा है कि वेहिकुलर पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप लोगों ने बात की, लेकिन हालत यह है कि बीआरटी को क्वेश्चन करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ नंबर ऑफ बीआरटी जो और बढ़नी थी वो नहीं बढ़ाई जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर डीटीसी फिर खस्ता हाल है। मेट्रो के अलावा जो बाकी विकल्पों पर चर्चा हो रही थी, चाहे मोनो रेल की बात करें, लाइट रेल की बात करें, वो सब के सब पेंडिंग में है। तो क्या इन इशूज़ को आप लोगों ने एड्रेस किया है क्या? ऐसा है, एक दिन में सभी सोल्यूशन नहीं आते। ए बी, कल हमने सभी सरकार और सभी एजेंसीज को बुलाया, 13 को सबको बुलाया है, तो उसमें से कुछ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान तैयार होगा। यमुना को लेकर कोई डिस्कशन हुआ हो? प्रकाश जी। क्योंकि वाटर पॉल्यूशन की आपने भी बात कही है कि दिल्ली में जो है पानी को लेकर चिंताएं हैं। पब्लिक वो तो एनजीटी ने तो शशि अगर जी को ही उसका अध्यक्ष बनाया है, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी है, वो सब देख रही है। वो अलग सा विषय है, इसलिए वो अलग। प्रकाश जी, जी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट की आपने बात की है, किस प्रकार के अमेंडमेंट आपको? अमेंडमेंट्स जो भी होते हैं वो हम केवल सदन में लाते हैं नहीं, पहले भी कंसल्टेशन, आज भी बहुत सुझाव आए और उसके लिए एक कमेटी भी छोटी तैयार हुई है। एयर पोल्यूशन के संदर्भ में भी एक कमेटी, कोई सभी विशेष राज्यों की विशेष मिलकर तैयार अमेंडमेंट हुई है। कोई? नहीं, अभी नहीं। सर इससे सब जुड़ा लोगों ने कहा जी कि ये 27 का कानून है और कानून की कल्पना ही यही है कि कानून समयानुकूल रहे, कानून जरूरतों के मुताबिक रहे, और इसलिए हर कानून की एक तरह से समीक्षा होना समयबद्ध तरीके से वो जरूरी होता है। सर मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, उर्मी एक मिनट से जुड़ा, ये फॉलोअप क्वेश्चन है सर इसका ही। जो आपने जंगल की परिभाषा की बात है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने भी कहा, उसको लेकर कुछ सवाल हैं सर कि जंगल जितना जो रेवेन्यू लैंड में जो भी फॉरेस्ट है, भले ही वो फॉरेस्ट है, उसे फॉरेस्ट अब रहेगा नहीं टेक्निकली, तो इससे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मांगेर का जंगल है जो गुड़गांव में है, इसके अलावा अरावली की पहाड़ियाँ और दूसरा भी दिल्ली में भी बहुत सारा जंगल है, उसको लेके कोई प्लान है ताकि ऐसे फॉरेस्ट बर्बाद ना हो? नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा। हमने एक अर्बन ग्रीन करके मूवमेंट शुरू करने का सभी राज्यों ने स्वीकार भी किया कि शहरी इलाकों में जमीन पर, विशेषता वन जमीन जहाँ जिन शहरों में है, वो अगर वहाँ वन नहीं है तो वहाँ इंक्रोचमेंट होता है, और इंक्रोचमेंट टालना है तो उसको प्रोटेक्ट करके वहाँ जन सहभागिता से वनों का जल्दी निर्माण हो, स्मृति वन के रूप में हो, लोग पैसे भी देंगे और वनों का निर्माण हो तो अर्बन लंग्स का काम भी करेंगे। तो अर्बन ग्रीन की मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट है, वो शुरू करेंगे। और एक भी आज तय हुआ कि जन सहभागिता हमारी हर कार्यक्रम में, हर स्कीम में लोगों का सहभाग बढ़ाए, ये एक जरूरी है। अच्छा, इसी के संदर्भ में एक जल्दी कहूँगा, आप आज जाते समय वहाँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एग्जीबिशन लगा है, जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिए कि टेक्नोलॉजी के सहायता से, with the help of technology, how we are now better managing forest, wildlife and pollution. So ये एक बड़ी अच्छी पहल है टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो जरूर आप देखिए। और आज हमारे मंत्रालय में आप जरूर जाइएगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी का हाट लगा है, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है वहाँ, अच्छे पैसे भी लेकर जाइए। सर लेकिन जो अर्बन लंग्स आपने बात कही, तो ये जो परिवर्तन है जंगल की परिभाषा में, उसके लिए तो खतरा पैदा हो रहा है ना। उसमें खुद लिखा हुआ है कि जो हमने बनाए हैं अर्बन इलाकों में फॉरेस्ट, वो इसलिए बनाए हैं ताकि इंक्रोचमेंट ना हो, बट दे आर ओपन टू उसको खत्म करने के लिए रास्ता खुलता है, क्योंकि अब वो टेक्निकली फॉरेस्ट नहीं रहेगा।
नहीं नहीं, ऐसा किसने फॉरेस्ट की डेफिनेशन ऐसी बदली नहीं है भाई। अभी जो फॉरेस्ट है लैंड, किसी भी 1 इंच भी फॉरेस्ट लैंड को अभी नॉन फॉरेस्ट लैंड घोषित नहीं किया है और नहीं करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी मॉनिटरिंग सिस्टम जारी करते समय आपने मुंबई और पुणे जैसे शहरों को अभी इंक्लूड नहीं किया, कोई खास कारण था? नहीं, कारण नहीं, वहाँ बिठाने है भाई। अभी जो 10 पहले रेडी तैयार है, ऐसा एक मशीन को भी पैसा लगता है, वो हम अलग अलग लोगों से टाइप कर रहे हैं, तो एक एक शहर की योजना तैयार हो रही है। तो अभी मुंबई, पुणे और बाकी भी शहर जो राजधानी के हैं वो जल्दी आएंगे, बड़े बड़े शहर सभी आएंगे, ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन के सभी शहर आएंगे। Sir, what's the next step? पहले ऐसा नहीं होता भाई, हैरानी वाली बात है। अब ये थोड़ा ही ना बनता है भाई, कहीं से शुरू करना है। मुझे लगा आप कहोगे कि आपने शुरू किया, बहुत अच्छा किया। Sir, what's the next step on this TSR Subramaniam committee report? What will be the next step? TSR Subramaniam committee is one input. Many states have given their suggestion, that is another input. Many people like you who are interested in environment have given their suggestion, that is third input. We are considering all inputs and will present a comprehensive law which may take little time, but we will come out with CAMPA Act. We are proposing CAMPA Act to give justice to the states, and we are proposing making punishments and stringent actions against polluters. तो उसके बारे में हम कुछ करेंगे, लेकिन कानून बनने के बाद जब प्रस्ताव होगा कैबिनेट में आएगा, आपको बताएंगे। And also, what about the Kasturirangan committee report? कस्तूररंगन कमेटी रिपोर्ट का अब ये तय हुआ 30 अप्रैल, 15 अप्रैल। By 15th April, all the states are mandated, all have agreed to give their suggestions, because after that the eco-sensitive zone will be declared by a process. So we want that input from the states. We have asked states to do ground truthing. Ground truthing is going to each village. So they have gone to each village in 7 states, and now the opinion of the people that matters for their development, or what they want, what kind of development they want, what kind of development they don't want. So all is mapped and will be considered. And how much time it will take for the final notification, sir? After 15th April, you asked this question, there is a process. सर, प्रधानमंत्री जी ने सप्ताह में एक बार साइकिलिंग चलाने की सलाह दी है। क्या आपकी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से साइकिलिंग को इनकरेज करने के लिए कोई योजना नीति तैयार? मैं तो रोज चलाता हूँ। देश की जनता के लिए नहीं, सबने करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्थी रहना चाहिए, पर्यावरण के पूरक रहना चाहिए, घर के सारे स्विच बंद करने चाहिए। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। 2 घंटे बाहर खेलना चाहिए, घर का एसी बीसी में नहीं बैठना है हर रोज। और आपके किट में एक लो कार्बन, हाँ, फुटप्रिंट एक कहाँ है वो, एक पुस्तिका दो, एक पुस्तिका दो, क्योंकि वो जो पुस्तिका है वो अपनी हर एक्शन का एमिशन कितना होता है, या अगर इससे नॉर्मल ट्यूब के बदले आप CFL यूज करोगे तो साल भर में आपके फैमिली से कितना कार्बन एमिशन कम होगा, इतना बखूबी अच्छा दिया है। So that's what we want to give, and I think we have given it. Yes. of the parliament, ये जो reviews हुए हैं laws के वगैरह, तो can you please elaborate on that? What are the inputs? वो मैंने वही बताया, अभी इंग्लिश में बताऊंगा। So we will give you draft laws when they are ready. We are not in a hurry to change everything. We want to change it for better. And therefore due diligence has been done, wider consultations possible have been done, every suggestions have been taken. This is the booklet which we have So, but the given. drafts are not on the website. Low You- carbon, huh? The drafts are not on the website. You Because said, draft we are not prepared. so you mentioned, you said that the Waste management drafts, हाँ, those 4, नहीं sir. 1 minute. अभी मैं दिखाता हूँ आपको,
होने के बाद आपको गाइड करूंगा एंड आई विल नेविगेट यू टू I'll be more than happy. Sir. यस। सुझाव दिया था कि स्ट्रीट लाइट चांदनी रातों को बंद किया जाए, उस पर किसी नगर निगम ने अभी हामी भरी? नहीं, अभी भरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरह से नागपुर में किया गया था सर, ऐसा एक साल नागपुर में हुआ है। नहीं, लेकिन हर साल हर महीने में पूर्णिमा होती है भाई, तो एक बार नहीं करना है, हर महीने में एक बार कम से कम करो। देखो, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना सबका मिलकर काम है। पर्यावरण की चिंता भी करना है, रक्षा भी करनी है, और उसके लिए हर एक को कुछ प्रयास भी करने हैं। तो हमारी जीवन शैली ऐसी है, भारतीय जीवन शैली की, जो पर्यावरण के अनुकूल है ही। पाश्चात्य देशों को उन्होंने कहा कि आपके लाइफस्टाइल में आप क्या बदलाव कर रहे हो, और दूसरा ये कहा कि हम स्वच्छ ऊर्जा में जा रहे हैं तो आप आणविक ईंधन नहीं दे रहे हो। तो इसके बारे में उन्होंने कहा, और ये जो अपील की है साइकिलिंग की, नेचर के साथ ज़्यादा रहने का, पर्यावरण पूरक जीवन फिर से शुरू करने का, तो इस आह्वान को लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रकाश जी, कल से बहुत रिस्पांस आया है। प्रकाश जी, like you ये said, कैटेगराइजेशन का जो है, इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन आपने कहा, ये कब से शुरू होगा, कब शुरू होगा और कब तक पूरा हो जाए? ऐसा है, इसमें होमवर्क बहुत है, तो एक कमेटी की है, जो कमेटी 1-2-3 महीने लगेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन बदलना है। फिर वो सुझाव होने के बाद फिर हम वही कंसल्ट ये प्रोसेस में जाता है, और फिर उसके बाद वो फाइनल नोटिफिकेशन होगा। Apart from initiatives that you'd like people and citizens to take to tackle pollution, like the NGT today has said that diesel cars over 10 years old should not be allowed into Delhi city. Is there something like that the ministry is planning for the country to tackle levels of pollution, especially when you see that they are high? The transport ministry, the petroleum ministry, are all the power, coal, every ministry in our government is already taking interest in these issues, and they will come out with their own solutions as soon as they are ready. So, the TSR in many states have expressed their reservation saying that it's diminished their power. So, what do you have to say? नहीं, उसमें कोई TSR सुब्रमण्यम कोई ये नहीं है ना, फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। As I said, it is one input. So everybody has reacted. Many things have been accepted. Many of their suggestions were welcomed. Some of the suggestions, people are not with that. So we have noted everything. Thank you.